अस्सलाम वालेकुम। मैं बीएस इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। आज हम पढ़ रहे हैं What is the portfolio analysis? So क्या है portfolio analysis? One of the areas of investment management that enables market participants to analyze and assess the performance of a portfolio, equities, bonds, alternative investment, etc., with the objective of measuring performance on a relative and absolute basis along with its associated risk. नेक्स्ट इसके टूल्स हैं जो पोर्टफोलियो एनालिसिस में यूज़ होते हैं। तो क्या सम ऑफ द टॉप रेशियोज यूज आर एज फॉलोज। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इट कैलकुलेट्स ओवरऑल रिटर्न ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड रिसीव बिगनिंग वैल्यू। सेकंड अर्थमेटिक मीन है, इसमें क्या कैलकुलेट्स द एवरेज रिटर्न्स ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो। अर्थमेटिक मीन क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn over an R रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल असेट्स। क्या है थर्ड है हमारे पास शार्प रेशियोज है, इसमें क्या कैलकुलेट्स एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रिटर्न पर यूनिट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। शेप रेशियो फार्मूला हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू एक्सेप्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन वॉलेटिलिटी। फोर्थ हमारे पास अल्फा क्या, इट कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। Alpha of portfolio is equals to actual rate of return of portfolio minus expected rate of return on portfolio. फिफ्थ मेरे पास ट्रैकिंग एरर है, इट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सेस रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू द बेंचमार्क रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या है ट्रैकिंग एरर फार्मूला किसके बराबर होता है, आर पी माइनस आर बी। आर पी का होता है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और आर बी होता है रिटर्न ऑन बेंचमार्क। सिक्स है मेरे पास इंफॉर्मेशन रेशियो, इसमें क्या है, इट कैलकुलेट द सक्सेस ऑफ एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर स्ट्रेटेजी बाय कैलकुलेटिंग एक्सेस रिटर्न्स एंड डिवाइडिंग इट बाय ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन रेशियो फार्मूला किसके बराबर होता है, आर पी माइनस आर बी ओवर ट्रैकिंग एरो, जो कि मैं आपको बता सकती हूँ कि आर पी और आर बी क्या होता है। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस, इसमें क्या इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू असेस द परफॉर्मेंस periodically and makes changes to their investment strategies if such analysis warrants. This helps in comparing not just portfolio against a benchmark for return perspective but also to understand the risk undertaken to earn such return, which enables investors to drive the risk adjusted return. Third it helps in realigning the investment strategies with the changing investment objective of the investor. And fourth it helps in separating unperformance, underperformance and outer performance, and accordingly investment can be allocated. नेक्स्ट है मेरे पास स्ट्रेटेजिक बेसिस बिजनेस यूनिट SBU। डेफिनेशन इसकी क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट implies an independently managed vision of a large company having its own vision, mission and objectives whose planning is done separately from other business of the company. The vision, mission and objectives of the division are both distinct from the parent enterprise and elemental to the long-term performance of the enterprise. नेक्स्ट मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में, इसकी क्या है कि सेपरेट बिजनेस और ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर बिजनेसेस ऑफरिंग स्कोप फॉर autonomous planning on site of competitors, a manager who is accountable for strategic planning, profitability and the performance of the division. A strategic business unit is specially formed to target a particular market segment which requires expertise in production or management not present in the parent company. मेरे पास एक टेबल चार्ट है जिसमें मैंने बताया हो कि प्रेसिडेंट क्या है, उसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट R&D, कॉर्पोरेट प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन, कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उसमें से क्या आएगा, SBU A, SBU B, SBU C। तो SBU A और SBU B में क्या होता है, डिवीजन 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 और डिवीजन, इनमें क्या होती है, डिवीजन होती है। इसके थ्री लेवल्स होते हैं इन अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट वेयर इन द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स रिमेन एट द टॉप, SBUs in the middle and divisions clustered by similarity within each SBU remain at the bottom. Hence the divisions within the SBU are associated with each other and the SBU groups are independent of each other. From the strategic viewpoint, each SBU is an independent business. A single strategic business unit is considered as a profit center and
governed by the corporate officers. It stresses over strategic planning instead of operational control so that the separate division of the SBU can respond as fast as they can to the changing business environment. सबसे पहले मेरे पास क्या है मार्केट पेनिट्रेशन है इसमें क्या है मार्केट पेनिट्रेशन इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज बीइंग यूज्ड बाय कस्टमर्स कंपेयर टू द टोटल estimated market for the product or service. Market penetration can also be used in developing strategies employed to increase the market share of a particular product or service. इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास लॉन्चिंग अ new product into the market is another market penetration example that can be used for growing a business. Companies tend to generate a lot of hype amongst their target markets when it comes to realizing new products. यानी कि जो न्यू प्रोडक्ट्स होती है उसकी लॉन्चिंग के बारे में फिर मार्केट डेवलपमेंट इसमें क्या है मार्केट डेवलपमेंट इज अ ग्रॉस स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व सेलिंग योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अ न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. It begins with market research where you carry out a segmentation analysis of your existing market. इसकी एग्जांपल क्या है कि let's say your software company has a new product offering available. In order to come up with the market development strategy, you need to research who the new product would work best for and the best way to target them. That in a nutshell will be your market development strategy. So next है मेरे पास product development. Product development also called new product management. It is a series of steps that includes the conceptualization, design, development and marketing of newly created and newly rebranded goods or services. Example है मेरे पास product development can often be as simple as taking as existing product modified slightly and selling it into your existing market. This adds value for customers who may well buy you new product even though they have the current version. Apple is a prime example of this. So next हमारे पास implementing the market plan. इसमें क्या है set realistic expectations for your market strategies, review your marketing planning. थर्ड हमारे पास identify sources. फोर्थ हमारे पास get project planning software. फाइव हमारे पास document the marketing strategies और सिक्स हमारे पास creating workflow. सेवन हमारे पास manage your marketing project एंड एट है हमारे पास measure results. तो ये था हमने आज डिस्कस किया है तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.